Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to solve a little bit advanced question on capital budgeting. With every session, we are going to learn something new about the capital budgeting questions. So please stay connected to solve these numerical. Take the maximum benefit and outcome out of these session. We are going to cover in both the language, Hindi and English. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, एक एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एवरी टाइम हम एक नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप इन सेशंस को एज अ चैलेंज ले सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी इन सेशंस को ऑप्ट करें तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, या अगर आपने कुछ और क्रिएटिविटी फाइंड की है कि आपके लिए ये सेशंस कैसे बेनिफिशियल हो रहे हैं, आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट with the capital budgeting, and the question is, rank the project in order of their desirability according to the payback period method and the NPV index method with the discount rate of 10%. So the NPV index method is all about, do not confuse it with the NPV. It is all about the profitability index with a discount rate of 10%. Okay, we have different projects A, B, C, D, E, F, G. We have A, B, C, D, E, F, G projects, and each having their own initial outlay with the annual cash flow. Annual cash flow means a cash flow which flows into the project every year, and the life of the projects. So we have a project A with the outlay of 10,000 and annual cash flow of 2,500 with 5 year of lifespan. Project B, 8,000 outflow, 2,600 annual inflow, 7 is the life year. Project C, 4,000 is the annual outflow, 4,000, and annual inflow is 1,000 with the 15 year of the lifespan. Project D with the 10,000 outflow, 2,400 annual inflow with 20 as a lifespan. Project E, we have 5,000 as an outflow, 1,125, that is 11 to 5 as annual inflow, and lifespan is 15 year. We have project F with 6,000 outflow, 2,400 annual inflow with the lifespan of 6 years. Project G, we have 2,000 as outflow, 1,000 as annual inflow, and lifespan is 2 years. So this is the basic detail with us and with the discount rate of 10%. Okay, so let's together solve this question. So first we will calculate in this ranking of the project. We do the ranking of the project on the basis of the payback period. Payback period. Don't worry, I'll discuss in both the language. First we will conclude in English, and then we'll support it by with the Hindi language. Okay, so let's prepare the table. There is no fixed format. I'm just doing this table for the good presentation. Okay, initial, outflow, one second, initial, outflow. Okay, annual cash flow, payback period. Okay, and then sorry, with the rank. Okay, sometimes student ask me, ma'am, is the presentation or doing solving everything is important? Yes, it is important. That's why I'm giving this much time to give a good presentation. So we have a project A, B, C. We'll write down every project, not to worry. D, E, F, and last one is the G. Okay,
We will do different type of advanced question on the capital budgeting, but it is very important. I'm taking you from the basics and slowly we'll solve the more difficult questions. Okay, so initial outlay in case of a project A is 10,000 and 2,500 is the annual. 10,000 and annual cash flow is 2,500. So how you can calculate the payback period? Outflow, your initial outflow by your annual cash flows. I hope you people learned about the theoretical concepts. Okay, so outflow by inflow, and do not memorize any numerical. I request you try to understand everything. Okay, so 10,000 by 2,500, it will be 4 straight away. So similarly for project B, we have 8,000 and 2,600. 8,000, 2,600. You can calculate project net outflow by annual inflow as, we will find the 3.1 as your payback period. Same we can calculate for project C, 4,000 and 1,000. 4,000 and 1,000. You can see how better the presentation with the like table. For project D, we have 10,000 and 2,400. 10,000 and 24, because when you do the good presentation, it will also improve your speed. Okay, it will be 4.2. For project E, 5,000 and 1,125. 5,000 and 1,125. 5,000 and 1,125. So we can calculate, it will be 4.4. For project F, we have 6,000 and 2,400. 6,000 and 2,400. 6,000 and 2,400. So it will be 2.5. And for project G, we have 2,000 and 1,000. 2,000 and 1,000. Payback will be 2. Okay. So we calculated the payback period, outflow by annual inflow. So now it's a time to give them a rank. So how we will give the rank? Conceptually, if we put in the project say 1,000 rupees, so when I am going to get this 1,000 rupee back will be good for me. The more early I get, the more good for me, the more I will able to generate the return. So the least time, the lower time, the less time, the minimum time is the priority one. Okay, so in the case we can see the project G is the like reverting into a 2 years, so we can ranking as a first. Project F 2.5 we can mark it as a second. Then we have project B 3.1 we can mark it as third. And for project A and C both are tie, so we give them an equal weight of fourth and fourth. Next project D we have 4.2 with the fifth rank, and project E is 4.4 with the sixth rank. In this way we have to rank it. So kindly give me a quick moment to conclude in other language. तो सबसे पहले हम जो है पेबैक पीरियड के बेसिस पे रैंकिंग देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रैंकिंग की है. ठीक है, हम समय के साथ साथ बहुत ही एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. देखिए यहाँ पे भी एक नई बात हमने ये पढ़ी कि एनपीवी इंडेक्स मैथड बोला है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोला है, एनपीवी तक नहीं रुकना है आपको. ठीक है, तो हर बार कुछ नया सीखेंगे हम. ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही करना है. मैं एक प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे प्रोजेक्ट ए है, उसका इनिशियल आउटफ्लो जो हुआ था वो 10,000 हुआ था, और सालाना एनुअल जो कैश फ्लो होगा वो था 2,500. तो आप पेबैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो इनिशियल आपका आउटफ्लो हुआ डिवाइडेड बाई आपका जो एनुअली इनफ्लो होता जाएगा. तो 10,000 बाई 2,500 आपका आ जाता है 4. ऐसे आपने ABCDEFG सबका कैलकुलेट कर लिया. जितने कम समय में आपका कैपिटल जो आपने लगाया था, जो आपने मूलधन लगाया वो आपका वापस आ रहा है, उतना अच्छा है ना, उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट है भाई. कि भाई देखो कितना जल्दी मैंने ये 10,000 लगाए थे तो वापस आ गए, या 2,000 लगाए तो 2 साल में वापस आ गए. राइट, तो पेबैक पीरियड क्या है, जितना जल्दी वो रिटर्न आएगा. तो उस वे में हमने रैंकिंग करनी है. तो आप प्रोजेक्ट जी को देख सकते हैं, 2 साल में वापसी आ रहा है तो उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे. प्रोजेक्ट एफ 2.5 में है तो उसे सेकेंड. प्रोजेक्ट बी जो है 3.1 है तो उसे थर्ड. प्रोजेक्ट ए और सी में टाई है तो दोनों को फोर्थ दे दिया. प्रोजेक्ट डी को हमने फिफ्थ दिया और प्रोजेक्ट ई को हमने सिक्स्थ दिया. क्यों दिया आपने देख लिया, कितने कम समय में जो चीजें आ रही है उसे टॉप प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So now let's calculate the ranking of the project on the basis of NPV index. So first we will do the net present
value index. Okay. So we have a project. Okay. Again, we will create the table, but for the better presentation, we will create initial outflow. Okay. Life in years. I'm trying to do it as early as possible. Life in years, but the places where an discussion is required, I can't skip that. Annual cash flow. Okay. Your PV factor, which is discount rate, was 10%. So this amount we will going to fill with the help of annuity table, but in your case the examiner will going to provide you the detail in the question itself. Okay, but in separate session what I'll do, I'll help you to understand how to check the your PV table. Okay, because few people are come up to me always and they ask me, ma'am, how to refer the PV table. So we'll discuss that also, but for the purpose of examination, because they are not allowed to carry the table with you, so they are going to give you the details in your question itself. Okay, so please mention the projects A, B, C, okay, D, E, F, and last one was the G. Okay, we have a different kind of students who are learning with us, a person who have a hearing disability, a lower volume level, so we try to help them, and that's why a few students asked me, ma'am, why you are reading multiple time, and this is why I'm reading multiple times, so that we can help them also to take maximum benefit out of this session. Okay, so because two people are in my knowledge, maybe the more are taking benefits. So initial outflow for project A is 10,000. For life is 5 year, and annual flow was 2500. Okay, so present PV factor at the rate of 10%, we can refer the table. So I'm now going to tell you, and in the next session I will let you know how to refer the PV tables. Okay, so currently I'm going to tell you 3.791 for project A. Okay, for 5 year. So I mark it as a column number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So present value will be your cash inflow, okay, 2500 into PV table, that is 4 into 5. 4 into 5. Hope you can do. So if you numbering them, it will be a good presentation for the purpose of examination. 9, 4, 7, 8. Okay. For project B, 8,000, C 4,000, then we D 10,000, E 5,000, F 6,000 and G 2,000. So outflow we put, then we put the life and years. A we have 5 year, B 7, C 15, D 20, E 15, F 6 and G is the 2 year. So annual cash flow is 2500 for the A, and for B we have 2600, for C we have 1000, for D we have 2400, for E we have 1125, for F we have 2400, and for G we have 1000. PV please write down. For A we already mentioned that 3.791, for B 4.868 please, for C 7.606, for D it will be 8.514, for E 7.606, for F 4.355, and for G 1.736. Again, I want to request you, currently I am sharing with you the PV factor, otherwise the examiner will give you, or I will teach you in the separate session how to refer your annuity table. Okay, so kindly multiply all the columns 4 into 5 in case of all the projects. 12,657 for B, 7,000
606 for C, 20,434 for D, 8,557 for E, and for F 10,452, and for G 1736. So if you can recall your profitability, I'm writing the shortcut, please avoid for the purpose of an examination. For profitability index, what you'll do, present value of cash inflows which we have calculated in the last column and by the initial outlay, and that's why now you can recall why I put into the table these initial outlay. So now please calculate your PI in case of all the project. So we have all the detail A, B, C, D, E, F, G. So I have some space issue, then I'll do here. You can continue there in your table. Create a column number 7, and what you do, divide your initial outlay present value column number 6 to divide by column number 2. So I'm doing here. Okay, I'm removing this for the. Okay. So I'm creating a column 7 here. Okay. You can continue. Hope you people understand. Again, we do A and then we rank them. Okay. B, C, D, E, F, and last one was G. Okay. So column number 7, what we do, column number 6 divided by outflow column number 2. So 6 divided by 2. So 6 were there, 9478 was in case of project A, 9478 divided by 10,000. 9478 divided by 10,000. You will get 0.95. I will round out into the 2 number. Okay. For project B, 12,657 divided by your outflow is 8,000. Okay, it will be your 1.58. Kindly do for all the projects A, B, C, D, E, F, G. 1.90. Okay. 1.71, 1.74 and 0.87. Okay, till the G. So now it's a time to rank. So in case of a profitability index, if the project is less than 1, we have to reject that. So we can see a project A and project G. In both the cases, profitability index is less than 1. So we have to reject. Okay, reject. Okay, because PI is less than 1. Then we have a 1.58 again, while we can see that project D is the highest, 2.01 with the highest projected. So we will mark it as a first. Okay, D. And then again we have 1.711. Then we have project number C with the second rank because it is 1.90. Then third F will be, project F will be 3, and then we have project E will be 4 and project B will be 5th. Hope you can gather that information. So kindly give me a quick moment to conclude in other language. नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हमारा जो है प्रोजेक्ट को रैंकिंग देंगे. सो मैंने टेबल प्रेजेंटेशन ही बनाई है, आपको जो भी कन्वीनियंट हो, जिस वे में करना हो आप कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. प्रोजेक्ट लिख लिया ABCDEFG तक, आपने इनिशियल आउटफ्लो लिखा, लाइफ इन स्पैन, लाइफ इन ईयर्स, एनुअल कैश फ्लो,
पीवी फैक्टर जो है जनरली आपको जो है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि उन्हें जो है पीवी फैक्टर्स की टेबल देखना है। तो आप मुझे बताएंगे तो हम उससे नेक्स्ट सेशन में एक पीवी फैक्टर कैसे टेबल दिखते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे गिवन रहती है इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, उसका फॉर्मूले से आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू आपके एनुअल इनफ्लो की। तो एनुअल इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, आपकी जो एनुअल इनफ्लो है, ठीक है, जो भी आपकी एनुअल इनफ्लो है इनटू पीवी फैक्टर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एनुअल फ्लो। तो ये मैंने कॉलम्स डिवाइड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो आपका 2500 प्रोजेक्ट ए के केस में एनुअल इनफ्लो है, पीवी फैक्टर है 3.791, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो है 9478 आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एनुअल इनफ्लो की, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास स्पेस इशू है, लेकिन आप कंटिन्यूएशन में ही बनाएंगे टेबल को। तो कॉलम नंबर 7 बनाएंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपटीशन का क्या फॉर्मूला है, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। तो आपका कॉलम नंबर 6 जो हमने कैलकुलेट किया और इनिशियल आउटले जो गिवन डाटा था उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया, ठीक है। गिवन डिटेल करना है। अब जो भी प्रोजेक्ट जो पीआई है लेस देन 1 है तो उनको हमें रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। उसके बाद जो हाईएस्ट होंगे उन्हें हमने फर्स्ट रैंकिंग देनी है, और साइमल्टेनियसली हम धीरे धीरे जो है लोएस्ट की ओर जाएंगे। तो प्रोजेक्ट नंबर डी जो हमारा आया था 2.04, इसको फर्स्ट रैंकिंग दी, सी को 1.90 सेकेंड, डी और एफ को 1.74 थर्ड, ई को 1.71 फोर्थ एंड बी को 1.58 फिफ्थ रैंकिंग दी। और इस बेसिस पे जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें किसी प्रोजेक्ट को रैंक करना है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एनपीवी के अगेंस्ट और आपके पे बैक पीरियड से। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये जो बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको लगता है अरे यार इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, बट आप बिलीव नहीं करेंगे इजी क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स आ जाती हैं। और इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर कि स्टूडेंट ने एनपीवी के बेसिस पे रैंकिंग कर दी थी, बट क्वेश्चन में एनपीवी इंडेक्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही बारीक बातें होती है जो आपको लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब दे के आते हो और रिजल्ट अच्छा नहीं होता तब कहते हो अरे यार मैं तो सब किया था, एग्जामिनर का मूड ठीक नहीं होगा। इट्स नॉट दैट। सो दैट्स वाई आई एम हियर टू हेल्प यू विथ एवरी न्यूमेरिकल। इसलिए मैं आपके साथ ऐसे न्यूमेरिकल कर रही हूँ, और हम वही बारीक न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे एक्चुअली में स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। सो वी ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑन द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एंड प्लीज इफ यू रियली लाइक इट give your words, and if you don't like it give your words what you want to be included in the part of your numerical discussion, and I hope it will, even if it helps you 0.1%, try to share your kind words, and I'll be happy and pleased to listen that. Stay connected, keep working hard, and till then take care, bye bye and Jai Hind.